आईटीवी देखने वाले सभी दर्शकों का हमारा इस झरोखा के साप्ताहिक कार्यक्रम में अभिनंदन है। आशा है आप सब अच्छे भले हैं और इस सप्ताह के कार्यक्रम का मज़ा लेने के लिए भी तैयार है। जैसे कि स्कूल की छुट्टियां भी आने को एक सप्ताह बची है, आशा है आप सब अपनी छुट्टियां किस तरह से बिताएंगे इसका प्रोग्राम बना लिए होंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज हम क्या लाए हैं। सर्वप्रथम वाइनिबोका हॉस्पिटल में पानी की समस्या, फिर बाग के वतिया रिजोर्ट की खूबियाँ और फिर ऑनरेबल जॉन बैंक से एक मुलाकात, अंत में ऑनरेबल विंस्टन पीटर्स से भेंटवार्ता। अब हम चलते हैं नसोरी के वाइनिबोकासी हॉस्पिटल। यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है और हम बातें करते हैं यादे विजन ग्रुप से, जिन्होंने यहाँ के लिए 2 वाटर पंप की आयोजना किया। और जैसे हम कह रहे थे कि यहाँ पर इतने ज़्यादा पानी होते हुए भी यहाँ पर तंगी है पानी का। अगर आप पूछेंगे कैसे हैं, तो हम आपसे ये कहेंगे कि नहाने के लिए है, मछली के लिए पानी है, जीव जंतु के लिए पानी है, लेकिन हमारे इंसान के लिए यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं। हाउ सैड। वनबकासी हॉस्पिटल हम हैं और ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सुबह में पानी आता है, फिर पानी प्रेशर इतनी लो होने के कारण से, और यहाँ पर पेशेंट को हम पानी नहीं दे पाते, और इसीलिए आज हम यहाँ पर आ गए। इसीलिए हम यहाँ पर वनबकासी हॉस्पिटल में आ गए, नवस्टोरी में है। और आप जानते होंगे कि हम डॉक्टर जैक के साथ यहाँ पर हैं। डॉक्टर जैक इज द एमओ ऑफ वनबकासी हॉस्पिटल। डॉक्टर, you are now being interviewed on Jharokha program in New Zealand. So welcome and thank you very much for sparing your time. And Doctor, you're in charge of this hospital. Directly the patients and the staff is your responsibility. The district comes under you, Wainibokasi Hospital in Nausori. You have a very serious problem in this hospital. Yeah, especially with the water. As you can see, our supplies from the main PWD line is having problems, especially with the increasing population. The pressure is not able to meet the demand. So what we basically did, we had donated tanks that were installed for the purpose of the hospital, and then once the tanks were mounted, the ministry provided us with 2 pumps that supposed to pump the water from the tank into the main building. However, the problem we had is that there's no servicing of our water pumps. And so when was the water pump installed? It was installed about 3 years back when we had the tanks mounted. 3 years back? Yeah. And since then, have you had any servicing done on it? There's no servicing done on it. Yeah, and so we need a new water pump. If you guys can provide us with that, especially to install and to pump the water into this main building and also to the second floor upstairs. Because we run some services for the antenatal clinics and the family planning and child health clinics upstairs, and they really need urgent water supplies, which we always don't get, especially when the pressure is low. Yeah, we've heard in the newspapers, we've read in the newspapers, in the radios, and even on TV, Yadi Vision of Australia, they sort of helping the underprivileged people, children, and underprivileged people around Fiji. So we kindly asking them to help us with this water problem that we have at our hospital. And I'll tell you something, brother. This is where it started. But do you know that it's not only in Australia? It's in New Zealand. There's Yadi Vision New Zealand, and there's Yadi Vision Canada, Yadi Vision America, all helping my Fiji. So this will go to Yadi Vision Group, the whole international group. So what do you want from Yadi Vision Group? We, in the hospital, what we urgently need is the issue with water. We can have a new water pump and perhaps some more tanks mounted so that we can supply sufficient water for our daily use
in the hospital, and also we need wheelchairs, especially we have a lot of amputees and people with diabetes and stroke that we have. They need rehabilitation. We need wheelchair to help them mobilize while they're recovering. And the water we have is the problem is converting that water into what people can use. And I think having a pump and having a tanks to fill and to supply the water directly to the people is a very important area that we need help with in this hospital, Wainibokasi. Okay, I tell you one thing, Dr. Jack, and you are the MO of this Wainibokasi Hospital situated in the Rewa district, which is in Sorry. Yard Vision Group, which comprises of New Zealand, Australia, Canada, and America, funneling the funds and goods to Fiji and yourselves and the education department as well. So we will make sure that we service this pump so you get clean water for your departments where you said there's health nurseries and so forth, and operations and amputute as well. We will give you, and if we can't service it and there's nobody here, then we'll give you another one, new one. How's that sound? Sounds good to me. So maybe if we appeal to the people in New Zealand, maybe somebody will come forward through your division. We would be very happy and we would appreciate any help. But, so us giving you pump will give you clean water to drink? Sure, it will help ease our problems, and the water itself will be good for the people to use. Okay. Dr. Jack, thank you very much. Thank you very much. This is a Jharokha program, and thank you for taking your time out, and we shall definitely endeavor to help Wainibokasi Hospital again. Thank you. Gulam Naka. जैसे आप देख रहे हैं जल, ये पानी नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर में है, इसका तोड़ जब ग्राउंड फ्लोर में इतना है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ये हमारा वाइनिबोकासी हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर का तोड़, which is incredible। ऐसे करके क्या सर्जरी हो सकता है क्या? और ठहरिए, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, और यहाँ से ये हटाकर ये दिखाता हूँ। ये देखिएगा, टोटल पानी इतना ही मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है। ऊपर तो कुछ भी ना के समान है। और जब हम ये खोलते हैं, लुक व्हाट हैपेंस देयर, वहां देखिए क्या हो रहा है। खुला हुआ नल, पानी बंद हो गया। वहां खोलने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऐसे चले। हाउ डज द सिस्टम वर्क? यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, पानी पीने के लिए जल नहीं, कुछ नहीं, जब हाथ धोने के लिए कुछ सामान नहीं, और फिर सर्जरी कैसे होगा? We have to help these people. I mean, Fiji needs our help. You can help, we can help, together with the other vision. Jharokha can help. मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. वातिया रिसोर्ट जो वातिया बा में है, देखते हैं वातिया रिसोर्ट की खूबियों को। और कभी भी फिजी जाए तो इस रिसोर्ट में ज़रूर रुकिए और इसका आनंद लीजिए। और दोस्तों साथियों, एक बार फिर झरोखा के प्रोग्राम में आपको हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आज जहाँ पर हम आ गए हैं, आप शायद अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ऐसा जगह यहाँ पर फिजी में है। फिजी में तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हम कहाँ पर है? और वतिया, आपको शायद आपने नहीं सुना, वतिया बीच रिजोर्ट, जहाँ पर एक नया अंदाज से रिजोर्ट बना हुआ है। और इस रिजोर्ट पे ऐसा कुछ खूबियाँ यूँ कहिएगा है जो और कोई रिजोर्ट में नहीं है। तो आप अगर पूछेंगे ऐसा कोई बीच है जिसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, तो हम कहेंगे हाँ, वतिया बीच में है। और जैसे हम बतला ही रहे थे कि इतने नज़दीक होकर भी इतनी दूर हम हैं कैसे, लेकिन आज हम जो दूरियां हैं वो एकदम से नज़दीक ला रहे हैं। और वतिया एकदम से सुंदर जगह है, और आप आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं? आप ऐसे नेंडी में लैंड होएगा, नेंडी से लोटो का सब्बा से तकरीबन 12 किलोमीटर अंदर और वतिया है। और जहाँ पर बीच है, हरियाली है और हवा है, पवन है, और हमारी जो इतनी सुंदर यहाँ पर जो
इतनी सुंदर ये समुंदर है और समुंदर में तो आप पागल हो जाएंगे। लेकिन आज खासियत ये है वातिया बीच का कि ये जो डिस्प्ले में रखा गया है, इसको देखते ही इसका नाम है जाता। लोग इसे चक्की भी कहते थे। तो एक बहुत ही सुंदर लोग आराम से कहते थे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई हो रामा। ऐसे कर करके हमारी माताएं जब इतनी सुंदर से खाना बना रहे थे बहुत अरसे पहले, जब इंडिपेंडेंस में आए, और यहाँ पर रोटी मेकिंग भी है। तो रोटी मेकिंग में देखेंगे आप, यहाँ पर खाना बन रहा है इस वातिया बीच में और यहाँ पर रिजोर्ट में। यहाँ पर इंडियन तरह से हिंदुइज्म की ओर से जो जो रोटी बनाने का ये जो तरकीब है, पुरानी तरकीब, आजकल तो लोग जानते ही नहीं। वो माइक्रोवेव, ये गैस कुकिंग और वातिया बीच में ये सब मिल रहा है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, इसमें इसमें ये क्या है? ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन आप ये शायद नहीं जानते होंगे कि जो गोरे लोग हैं रिजोर्ट में आकर ये सब देखने को कहाँ मिलता है। हमारा जो महजब है, हमारा जो ये सब बनाने की तरकीब है, ये कहीं नहीं मिलता है। इट इज़ हियर। उनके लिए ये बनाया गया है, जस्ट टू एक्सपोज आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो गोरे के लिए ये बनाया गया है रोटी मेकिंग इक्विपमेंट। आपके लिए भी, हमारे लिए भी, इन एक्सपोजिंग द इंडियन कल्चर टू द होल ऑफ द वर्ल्ड। फैंटास्टिक। और जब हमारी माताएं रोटी बना रही थी तो हमारे जो पिताएं क्या कर रहे थे, ऐसे तंबूरा भजन लेकर, बस वही गाना मुझे याद आ रहा है, श्रवण भक्त की गाथा क्या है, हे संतों की बानी, ना 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 ना। ये क्या, आई एम टेलिंग यू नाउ, आप इसको नहीं यूज कर सकते। हालांकि आप इसके विषय में जानते हैं, लेकिन बहुत ज़माना हो गया। जो वेस्टर्न साइड से ताल्लुकात रखते हैं वो जानते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस इज। और ये क्या है? कृष्ण भगवान को ये माखन बहुत पसंद था। तो माखन किस तरह से बनाते हैं ये आज हम आपको दिखाएंगे। दिस ट्रेडिशन स्टिल लिव्स इन दिस बतवा विलेज। चोरी चोरी माखन खाएगा रे एक छोटो से। और जैसे हम कह रहे थे, ये माखन बनाने का जो तरकीब है इतना पुराना है। तो मुझे जब हम ये जब करते हैं तो मुझे एक ही बात याद आता है, कृष्ण भगवान का वो जो नटखट आदत और चोरी करने का आदत ऐसा ही था। चोरी चोरी माखन खायो गयो रे एक छोटो से ग्वालो। आय हाय मेरे कृष्णा, मेरे ये बनाने की जो आदत है, ये हम पागल हो रहे हैं। माताएं, डू यू रियली नो, इसमें से जो माखन निकलता है इतना सुंदर होता है, हमारे कृष्ण के लिए बहुत ही प्यारा है। यू विल एंजॉय दिस। और ये खाने योग्य भी है। और मुझे ये हालांकि और आप जैसे देख रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं और वतिया बीच में हैं, और हमारा जब नेशनल स्पिरिट यानी कि हमारे जो रूह जाग जाता है तो यहाँ पर एक्सपोजर आ जाता है। ऐसे एक आदमी हैं, आप जानते होंगे, एक्स मेयर ऑफ बा है और डिजेंद्र सिंह है। मैं उनके बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ। ही इज़ डन सो मच फॉर आवर कंट्री एंड मेंबर ऑफ नेशनल चार्टर्ड एडवाइजरी काउंसिल अपॉइंटेड, करंटली अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और यही डिजेंद्र सिंह हैं जो फिलहाल प्रेसिडेंट ऑफ टावा चैम्बर कॉमर्स में भी एक्टिव मेंबर है। यही डिजेंद्र सिंह है मेंबर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ फीजी, नेशनल टास्क फोर्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पुअर इन फीजी। बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और आज की डेट में, आज की तारीख में, ये हमारी जो इंडियनिज्म है वो प्रमोट कर रहा है, ताकि गोरे लोग आकर देखें कि हमारे इंडियंस मतलब क्या करते थे। इतने सारे काम करने के बाद इतने सारे मेडल्स उनको मिला है। यहाँ तक कि जो ये खासकर है क्वींस मेडल इनको मिला है। फीजी में ये सब मेडल दिया गया और आज तक ऐसे एक्टिव मेंबर शायद हमारे कौम में नहीं है। अगर है तो हमें नहीं पता। बातें भूल जाते हैं, यादें याद आती हैं। वो पुरानी यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है। हाय वो यादें जो कल तक था आज नहीं। आप बॉबी के साथ है, वातिया बीच में हैं, और हमारे हेरिटेंस जो है, हमारी हेरिटेज जो है, उनका जागृत होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट दैट हमारा जो ढोलक सामने रखा हुआ है, हमारी जो तंबूरा भजन रखा हुआ सामने, ये हमारा सेल्स रखा हुआ सामने। Oof, I really feel like crying, you know, because now that all this is happening, क्योंकि I'm a very nationalistic type of person। क्या आप भी है हमारे जैसे? अगर है ना तो चलिए हमारे साथ कभी कहीं झरोखा के साथ, कहीं ना कहीं हम आपको ऐसे जगह लेकर चलेंगे कभी आपने देखा है ना तो देखेंगे। I promise you। बॉबी है, फिर मिलेंगे। नमस्कार। आपसे दोबारा मिलते हैं
एक ब्रेक के बाद। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. मुलाकात करते हैं ऑनरेबल जॉन बैंक से हमारे संवाददाता संजेश के साथ और देखते हैं कि ये बिल मैकिनली पार्क में क्या परिवर्तन ला रहे हैं और इससे हमें क्या सहयोग मिलेगी। What are you going to do to Bill McKinley Park now? Well, I think the potential here in East Auckland is amazing. This has a wonderful heritage, this park, where some wonderful sport has been played over many, many years. And in more recent years, the home of Mount Wellington soccer and New Zealand Fiji soccer. And I support them. We need an all-weather turf here, 7 days a week, 52 weeks of the year, where young people from the community can participate on this ground and play sport. Not just soccer, but any sport on an all-weather turf. I've told the clubs tonight that I'm committed to delivering on this. The timing is not yet quite clear, but it's a facility we need. It's a facility that's well overdue, and we're going to make it happen. So, is there any plan to build any more stadiums out there? Oh, I don't think we'll be building more stadiums out there, but we will do community projects like this, deep in the community, around the people that play the sport, that need the grounds, 7 days a week, 24 hours of the day if necessary. So we'll get out there and we'll build infrastructure like this. As for more stadiums, we've got North Harbour, we've got the wonderful Mount Smart, and we've got the truly great Eden Park. So we have enough stadiums, we just need more events. And we need the backup underpinning that by community facilities like Bill McKinley Park. That will be funding. So the funding is always available for this kind of project? Oh, well, the funding is not always available for everything, no. But the funding needs to be made available for Bill McKinley Park, and my commitment is to go out and help raise that funding. So that's my commitment to the good folks tonight. How did you find the New Zealand Fiji soccer officials today and the members of the association? They're good blokes. Yeah, they've got a big crowd, about 5,000 members. They're not small. They're big, they're hardworking, they're good family people, they're loyal, they're patriot, they love the game, and they want to roll up their sleeves. So of course I support them. Thank you very much. You're welcome. मिलते हैं ऑनरेबल विंस्टन पीटर्स से हमारे संवाददाता आकाश के साथ और सुनते हैं कुछ बातचीत एमपीज के क्रेडिट कार्ड पर और उनकी गलत इस्तेमाल पर। सुनते हैं ऑनरेबल विंस्टन पीटर्स की इस पर क्या राय है। Mr. Peters, good to see a smile on your face, and thank you very much for giving us the time, because it's quite difficult for journalists to come and speak with you. Thank you very much. Now, as a leader of a party, and then having served as the Deputy Prime Minister, and of course you would have visited countries and acknowledged visitors as a Prime Minister in your time, and then you had some 17 MPs under you. You brought with you when you formed government, when you helped National to form government. So, and plus you've been in politics for some 30 years now. Thereabouts. Thereabouts. This credit card, misuse of credit card, or the transparency of ministerial MPs' expenditure. What are your thoughts on it? Well, for some ministers, they clearly were negligent in moving and using the card. They didn't repay what was personal use back fast enough. But a great number of ministers did use the card properly, or, like me, never ever used their card. Never ever used the card once. I had a card 3 different times when I was a minister. But frankly, it's become a circus, because you've got the kind of talk about how to operate which would never be successful when you're travelling. People who say that, and some of the media have said that, clearly don't know what they're talking about. You can't operate unless you have one person, he or she's got the card, cover the whole group, get on the plane as soon as you get out of a country, spend the first half hour fixing up the bill as to what was personal, what belongs to the taxpayer, and then carry on. And that's what I did. And it was a very successful way of going. And the idea that you can all be down there paying, when there's about 80 people in the lobby all trying to get paid, to all pay their accounts,
means you're going to miss planes and miss your bags, and a whole lot of things can go too far wrong in Now, foreign this is the countries. practicality of it, right? Yeah, I'm talking about the practicality of it all, and what matters is whether the people sincerely did their best. And I've seen, one or two cases here where the figures are literally about $1 every week. They might have made a mistake when you look at it in total. Now, frankly, Mr. English, right? His housing account is greater than all those ministers all put together. So let's not have one rule for one group of people and another rule for the elite. Be fair here. Okay, being fair and unfair is what coincidentally enough, was my next question. Now, taking into consideration that Labour had been in power for some 9 years, now this transparency thing is going back as far as 6 years now. Do you think this is a little unfair on the Labour Party? Do you think that the expenses of National when they were in power needs to come out, just to play fair here? Well, of course it should, to be fair. And the media should be asking for it, but they're not, of course. That's easily explained for a lot of reasons, but they should be seeing the other accounts. Is it just, can we have a little comparison with everyday life here with ministerial credit cards? Well, I think the ministerial credit card comes from the business credit card, from that culture. I've seen a few comments by businessmen about how they operate, and that's just crap. I've been around long enough, with them long enough, seen them long enough to know that they're not talking the truth here. Most ministers were diligent about their job and about use of the credit card, because most of them, like me, put it in the hands of one staff member on whom we could rely, and all the evidence proves that. So, let's not bang on the head every good minister who behaved properly just because some didn't. Itemise the ones that were wrong, but don't put everybody in the same boat. And don't write a system that is so ineffective. You've now got ministers wasting gross amount of hours trying to do things when they should be getting on with their job. Leave it to the staff to do that sort of work. You've always had a great interest in the finances of running the country. Now, this documentation is somewhere around, this consists of somewhere in between up to 7,000 pages, I think. I'd hate to find out the cost involved in digging this up. Well, the cost will be huge. It'll be tens and tens, maybe hundreds of thousands of dollars. This cannot be productive either. The fact is, the system that the ministerial services say was in place was never properly in place because their system can't work. Most ministers got on with the job honestly, and all those figures show it. It's peanuts. And in most cases, they had seen that the matter was personal. They then paid it off. No interest charged to the taxpayer, no loss to the taxpayer whatsoever. And so the argument comes down to, should there be a ministerial credit card? And the answer is, of course, if you want to operate efficiently, one staff member with the card, all the rest reconciling it before you get home from the trip, and things would work smoothly, as they did in nearly all the cases I've seen. I appreciate you explaining it to us. Now, you being a leader of the New Zealand First Party, keeping your options open to work with either right now, can this be seen as that Winston Peters is speaking in favour of Annette King and Phil Goff? On this question of the credit card? Of the credit card issue? Well, what we've got is a circus here with only one party having their records checked. There's been no check of the National Party at all, because the National Party's only been with respect to their housing accounts. And 2 investigations get you 2 gold mines. Heatley, the Minister of Housing, this was extraordinary what he was doing, just on the housing account. And then you've got Bill English, the Deputy Prime Minister. Minister of Finance also. The man's going to be in charge of it. His figure is $500,000. So let's have some honesty here on the part of the media. Fantastic. It was fantastic to have you. It was lovely to have you once again, and I hope I've kept my doors open for next time. Thanks very much. You have a great evening. Just try and get here earlier, that's all. You've been watching the leader of the New Zealand First Party, Winston Peters. Keep watching iTelevision. We'll have some more later on. Thank you. तो अब हम कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। आशा है आपने कार्यक्रम को पसंद किया होगा और बहुत सारी जानकारियां भी हासिल की होगी। अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह और भी नए कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।